Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. So I told you in the Hindu Daily News Analysis lecture that I will be talking about the Information Technology Rules 2021 in a separate lecture video. So this is the separate lecture video wherein we are going to understand what are the IT Rules 2021. This is important from the perspective of prelims and also GS paper 3 as well as the essay paper. आपका essay paper हो, GS paper 3 हो या prelims हो, तीनों के perspective से ये IT Rules 2021 काफी important है. ठीक है, तो let's get started. Let's understand what are the IT rules. And there was an article in the Hindu newspaper today as well that Google has removed some 53,000 or 59,000 posts from the social media platforms. So under the IT rules, they have also submitted the transparency paper to the government, stating that they have acted on the complaints that they received from the users of the social media platform. So basically ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूल्स हैं. स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड, मैम दीज रूल्स आर प्रपोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नो, दे आर नॉट प्रपोज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दे आर रादर प्रपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. So the new IT rules, they are going to regulate the digital content now, and now the new IT rules have a feature of code of ethics. ये जो नए IT rules निकाले गए हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसमें कोड ऑफ एथिक्स का फीचर डाला है एक, और 3 tier ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फ्रेमवर्क भी डाला हुआ है. और मई 26 से ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए थे. फेब 2021 में सेंटर ने फ्रेम किया था IT रूल्स 2021. दे एक्सरसाइज द पावर्स अंडर सेक्शन 87 subsection 2 of the Information Technology Act 2000, and that is why the rules came into effect under the Ministry of Electronics and Information Technology. So 2 new features have been added: code of ethics and 3 tier grievance redressal framework. Let us understand what are the proposals under the new rules. First proposal is that it mandates a grievance redressal system for over the top प्लेटफॉर्म्स. ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका हो गया, सॉरी नॉट फेसबुक ओवर हियर, जैसे कि आपका हो गया Amazon प्राइम. OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, Amazon प्राइम हो गया या फिर Netflix हो गया. ठीक है, these are the OTT platforms and digital portals in the country, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. तो it mandates grievance redressal mechanism or grievance redressal system. मतलब if you have any problem, any issue, any complaints regarding the OTT platforms or digital portals, you can file your complaints at the grievance redressal system now. So कोई भी सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, अगर आपके सामने कोई मिसयूज हो रहा है तो आप उस मिसयूज को, उस कंप्लेन को ग्रीवेंस redressal system के आगे रख सकते हो. Second, significant social media firms have to appoint chief compliance officer and a principal or nodal contact person who can be in touch with the law enforcement agencies 24/7. Significant social media firms, that is important social media firms, चाहे वो Twitter हो, चाहे वो Facebook हो, जो important social media firms हैं, उनको अपने पास एक chief compliance officer और एक कॉन्टैक्ट पर्सन, प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट, मेजर कॉन्टैक्ट पर्सन अपने पास हायर करना होगा जो 24/7 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के टच में रहे. इन केस देयर आर एनी कंप्लेंट्स, एनी बिग इश्यूज, दे कैन बी इन टच विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एट एनी टाइम. थर्ड स्टेप, a grievance officer. Social media platforms will also have to name, underline this, to name a grievance officer who shall register the grievance within 24 hours and dispose of it in 15 days. So in 15 days the grievance officer has to solve the case, has to remove the issue, right? अगर आपको कोई complaint, कोई issue, कोई problem है किसी post से या किसी social media के misuse से, तो एक grievance officer आपका 24 hours के अंदर case register करेगा और इसे 15 दिन में solve करेगा. Then removal of content. If there are complaints against the dignity of users, particularly the women, about any exposed private parts of individuals or nudity or sexual act or impersonation, etc., then the social media platforms will be required, underline, to remove that within 24 hours after the complaint is made. एक बार complaint किसी ने कर दी, किसी तरीके की undignified post है, तो उसको कंप्लेन अगर की जाए तो कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 24 घंटे के अंदर कंप्लेन मेड करने, रजिस्टर करने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा. एंड अ मंथली रिपोर्ट, दैट इज व्हाई गूगल हैज सबमिटेड अ मंथली रिपोर्ट एंड दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज. दे आल्सो हैव टू पब्लिश अ मंथली रिपोर्ट अबाउट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड एंड द स्टेटस ऑफ रिड्रेसल. 53 से 59,000 पोस्ट रिमूव किए हैं गूगल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से.
तो इसी के चलते गूगल ने एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक है। देन देयर विल बी 3 लेवल्स ऑफ रेगुलेशन फॉर न्यू पब्लिशर्स. First level of the regulation will be underline self regulation, then self regulatory body, and it will be headed by a retired judge or an eminent person, and oversight from information and broadcasting ministry including code of practice and grievance committee. तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या पब्लिशर्स हैं, पहले उनको सेल्फ रेगुलेट करना होगा, खुद को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी तैयार करनी होगी जिसमें कोई इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सन या रिटायर्ड जज अपॉइंट करे, और जो भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स या कोई भी फैक्ट लॉन्च कर रही है उसको भी मद्देनजर रखते हुए अपने कोड्स ऑफ प्रैक्टिस में और ग्रीवेंस कमिटी में इंक्लूड करना होगा. सो दीज आर द न्यू रूल्स. यू कैन सी दे आर इंक्रीजिंग द रेगुलेशन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. एंड सोशल मीडिया giants like Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, they could face a ban also if they do not comply with the new information technology rules. Underline this, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बैन भी किए जा सकते हैं अगर वो नए आईटी रूल से कंप्लाई ना करें. दे कैन ऑल्सो रन अ रिस्क ऑफ लूजिंग देयर स्टेटस एज इंटरमीडियरीज. दे मे बिकम लायबल फॉर क्रिमिनल एक्शन ऑल्सो. अगर वो कंप्लाई नहीं करते रूल से तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज भी लगाया जा सकता है. बट देयर आर कंसर्न्स एज वेल. नाउ बिफोर वी स्टडी द कंसर्न्स, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. Unacademy has started the Unacademy Promise initiative, and this offer ends on 7th July. So what is this Unacademy Promise? If you take or if you purchase a 2-year and above subscription on Unacademy Plus, Unacademy promises you that if by any chance you do not clear UPSC exam, then they will promise you to give 1 year free extension to study on Unacademy to fulfill your dream. See, if you're a college student or a working professional, and if you're preparing for 2023 or 24 attempt, and you are keen on getting right guidance or mentorship on Unacademy, you are purchasing a 2-year subscription plan, then if in case unfortunately by any chance by any 1% chance if you do not clear the attempt in your first attempt और first move अगर आप दे रहे हो, first छोड़ो अगर आप दे रहे हो और नहीं क्लियर कर पाए, तो फिर अनअकैडमी आपको प्रॉमिस करता है कि आपको वो 1 साल का और एक्सटेंशन देगा फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के लेक्चर्स देखने का, ठीक है, ताकि आप अपनी जर्नी को अपनी एम को फुलफिल कर सको. एंड नाउ यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑल्सो इफ यू यूज दिस कोड अर्पिता10. द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो अबाउट ऑल द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग ऑन अनअकैडमी. You can click on them and subscribe today. This offer lasts on 7 July. So the concerns are various industry bodies have written to the government for up to a 1-year compliance window. इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सी इंडस्ट्रियल बॉडीज है जिन्होंने कहा है कि ये आईटी रूल से कंप्लाई करने के लिए ना हमें 1 साल का कंप्लायंस विंडो दो, 1 साल का समय दो, 1 साल हम जरा अपने आप को अडेप्ट कर ले कि किस तरीके के रूल्स है, कैसे इनको आप पालन करना है. सेकंड, कंसर्न्स हैव आल्सो बीन एक्सप्रेस्ड ओवर पोटेंशियल अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेफ हार्बर प्रोटेक्शन व्हिच आर गिवन टू इंटरमीडियरीज लाइक दी सोशल मीडिया जायंट्स. ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरीज होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को लोगों से जोड़ती है. अब कंसर्न्स ये आए हैं कि हम इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा इस रूल्स में. आपने ये तो बता दिया कि आप कैसे कैसे बैन कर सकते हो, कैसे रेगुलेट करोगे, हमें कैसे मॉनिटर करोगे, बट हमें प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं, कहीं से हमें निजात मिलेगी या नहीं अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट. They have requested a rethink over a clause in the new rules which can lead to imposition of criminal liability. Over here I have told you that if they are not following the regulations, they can be criminally charged also. So the social media platforms are saying that if the employees by chance are non-complying, right, किसी तरीके से नॉन कंप्लायंस हो जाता है तो आप सीधा क्रिमिनल चार्ज लगा दोगे. तो इसको आप थोड़ा सोचो फिर से, ठीक है, ये थोड़ा बहुत सीरियस इशू है. Originator traceability mandate in end-to-end encrypted platforms could end up weakening the security architecture. Now the WhatsApp, Facebook, they are saying that we are end-to-end encrypted. Your messages can never be read by anybody else. But if you are imposing these rules, if we want to remove the some malicious post from our platforms, we need to remove this end-to-end encryption. हमें मैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे तभी तो हटा पाएंगे, हमें पोस्ट पढ़ने पड़ेंगे, मैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे तभी हम हटा पाएंगे. बट उससे क्या होगा, प्राइवेसी वीक हो जाएगी, साइबर अटैक्स इंक्रीज हो जाएंगे.
Additionally, the extant data retention mandate entailed risking privacy of users in India and abroad. In addition to there are security risks. There are technical complexities if we are going to find out or act on the complaints of the users on social media. We need to, soften up the end-to-end encryptions. So that will entail losing the privacy of the users of these platforms. Okay, so these are the concerns which have been raised by the social media platforms on the IT rules also. So this was all about the IT rules 2021. I hope you enjoyed this lecture series. Let me know in the comment section what are your comments on these new IT rules.